Namaskaram, a warm welcome, Swagatam to all the participants of Lalita Sahasranama Stotram chanting session. Kshamyatam, apologies for the delay in starting due to some technical issues. We will start with the Mangalam to the Gurus. Gurureva gatihi gurumeva bhaje Gurunaiva sahasmi namo gurave Na guroh paramam shishurasmi guroh Matirasti gurau mama pahi guru. We will chant the Dhyana Shlokam. Before we chant the Dhyanam, let us all do the Dhyanam, visualize the form of Lalita Parameshwari for a few seconds. सिन्दूरारुणविग्रहान् त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीम् सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्. First verse of Lalita Sahasranamam. What we will do today is we will do a revision once of 1 to 50th verse, while I chant once and the panelists will repeat once. And I request all the participants to chant though you are being on mute, so that it will be a practice session also. After which I will start the 5 new shlokas, and then we will have a revision from the participants chanting and practicing session. So there is an important announcement that I would like to share with you all before we start. As I announced last week, we are entering the last phase of the Lalita Sahasranama learning chanting session. Though I'm saying it's the last phase of chanting session, it's a journey that we have begun and we will continue this learning further. But however, the course has reached is reaching the final phases. So in probably next 2 to 3 weeks we will be completing it. So as next step, what we will be doing is there are last few set of shlokas which I'm going to teach between this week and next week. In addition to the revision, we will also have a practice class on one of the days where we chant the entire Sahasranamam and practice. And post which there will be an assessment. I would like to call it more as a Samarpanam to Jagadguru and Lalita Parameshwari, the assessment. So what I'll be doing is after this session today, you will be getting an email to your mail IDs. All the participants, registrants will be getting an email to your the registered email ID with a link, a Google form. Basically, it's a very simple form which I request you to fill it up, which will have options to indicate your preference to take the assessment. So it's purely optional. You can opt to take the assessment or not take the assessment. You can indicate whatever is your choice. And even in the assessment, you can indicate whether you want to do a kantasthikaranam, that is, by smaranam, by memorization. Do you want to take an assessment, that is chanting without seeing the script, without seeing the book? That is one option. The second option is chanting the Parayanam itself by seeing the scripts, by seeing the book. So you can choose what is comfortable for you based on your preference. While I'm telling it is not mandatory, but I would request you all to take part in the assessment. One, because it is an opportunity for us to present our learnings, and there's an opportunity to improve, learn better, because the
The assessment will help you to fine tune and learn further the journey which you have started for learning the Sahasranama, Lalita Sahasranama chanting. It has to continue further and go further, enable you to learn other things. So I would sincerely request you all to take an assessment, whether it is a Parayanam, seeing the script assessment, or a Kantasthi Karanam by memory. If you have already memorized the Sahasranamam, you can take a Kantasthi Karanam assessment. So once you get an email in the Google form, you need to give your details. Some basic information will be asked. You can fill your details, choose between the Kantasthi Karanam or the Parayanam and submit it. So based on the response we receive, we will fix a date. We will share the date with you, the test date and other details. How do we attend the test and those kind of things. The form also has other information. So I request all of you to fill the form once you receive it and submit it. So with that, let us start today's learning. Amogha, once I teach, you can repeat once. ॐ श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणीकनत्कोटीरमण्डिता चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणीकनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषका अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषका वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मीपरीवाहचलन्मीनाभलोचना वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिका
नेत्रलक्ष्मी परिवाह चलन्मीनाभलोचना नवचम्पकपुष्पाभनासा दण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारिणासाभरणभासुरा नवचम्पकपुष्पाभनासा दण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारिणासाभरणभासुरा कदम्बमञ्जरी क्लिप्तकर्णपूरमनोहरा ताटङ्कयुगलीभूततपनोडुपमण्डला कदम्बमञ्जरी क्लिप्तकर्णपूरमनोहरा ताटङ्कयुगलीभूततपनोडुपमण्डला One minute. पद्मरागशिलादर्शपरिभाविकपोलभूः नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरदनच्छदा पद्मरागशिलादर्शपरिभाविकपोलभूः नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरतनच्छदा शुद्धविद्याङ्कुराकारद्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्षि दिगन्तरा शुद्धविद्याङ्कुराकारद्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्षद्दिगन्तरा समाकर्षि दिगन्तरा. Can you repeat this line? शुद्धविद्या Complete line, Karpura. कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्षद्दिगन्तरा निजसल्लापमाधुर्यविनिर्भर्त्सितकच्छपि मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसा निजसल्लापमाधुर्यविनिर्भर्त्सितकच्छपि मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसा अनाकलितसादृश्यचिबुकश्रीविराजिता कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्धरा अनाकलितसादृश्यचिबुकश्रीविराजिता कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्धरा कनकाङ्गदकेयूरकमनीयभुजान्विता रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ता फलान्विता रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ता फलान्विता भुजान्विता रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ता फलान्विता कामेश्वर प्रेम रत्नमणिप्रतिपणस्तनी नाभ्यालवालरोमालिलता फलकुचद्वयी
कामेश्वर प्रेम रत्नमणि प्रतिपणस्तनी नाभ्यालवाल रोमालिलता फलकुचद्वयी लक्ष्यरोमलता धारता समुन्नेय मध्यमा स्तनभारदलन्मध्यपट्टबन्धवलित्रया लक्ष्यरोमलता धारता समुन्नेय मध्यमा स्तनभारदलन्मध्यपट्टबन्धवलित्रजा अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतटी रत्नकिङ्किणिकारं यरशनादामभूषिता अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतटी रत्नकिङ्किणिकारं यशनादामभूषिता कामेशज्ञातसौभाग्यमार्तवोरुद्वयान्विता माणिक्यमुकुटाकारजानुद्वयविराजिता कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दवोरुध्वजान्विता माणिक्यमुकुटाकारजानुध्वजविराजिता इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतूणाभजङ्घिका गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठजयिष्णुप्रपदान्विता इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतोणाभजङ्घिका गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठजयिष्णुप्रपदान्विता नखदीधिति सञ्चन्ननमज्जनतमो गुणा पदद्वयप्रभाजालपराकृतसरोरुहा नखदीधिति सञ्छन्ननमज्जनतमो गुणा पदद्वयप्रभाजालपराकृतसरोरुहा सिञ्जानमणिमञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजा मरालीमन्दगमना महालावण्यशेवधिः सिञ्जानमणिमञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजा मरालीमन्दगमना महालावण्यशेवधिः सर्वारुणानवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सर्वारुणानवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुमध्यशृङ्गस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता सुमेरुमध्यशृङ्गस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता
महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागर मध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवा भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेना समन्विता देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवा भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेना समन्विता सम्पत्करी समारूढ सिन्धुरव्रजसेविता अश्वारूढाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृता सम्पत्करी समारूढ सिन्धुरव्रजसेविता अश्वारूढाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढ सर्वायुधपरिष्कृता गेयचक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता चक्रराजरथारूढ सर्वायुधपरिष्कृता गेयचक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता गिरिचक्ररथारूढ दण्डनाथा पुरस्कृता ज्वालामालिनिका क्षिप्तवह्निः प्राकारमध्यगा चिरिचक्ररथारूढदण्डनाथा पुरस्कृता ज्वालामालिनिका क्षिप्तवह्निः प्राकारमध्यगा भण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षिता नित्या पराक्रमाटोपनिरीक्षणसमुत्सुका भण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षिता नित्या पराक्रमाटोपनिरीक्षणसमुत्सुका भण्डपुत्रवधोद्युक्तबाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचितविषङ्गवधतोषिता भण्डपुत्रवधोद्युक्तबाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचितविषङ्गवधतोषिता विशुक्रप्राणहरणवाराही वीर्यनन्दिता कामेश्वरमुखालोककल्पितश्रीगणेश्वरा विशुक्रप्राणहरणवाराही वीर्यनन्दिता कामेश्वरमुखालोककल्पितश्रीगणेश्वरा महागणेश निर्भिन्न विघ्नयन्त्रप्रहर्षिता भण्डासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्रवर्षिणी महागणेश निर्भिन्न विघ्नयन्त्र प्रहर्षिता भण्डासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्रवर्षिणी
कराङ्गुलिनखोत्पन्न नारायण दशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्निनिर्दग्धासुरसैनिका इषु कराङ्गुलिनखोत्पन्न नारायण दशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्निनिर्दग्धासुरसैनिका second line, can you chant again? Nirdagda, your da is alpa prana and dha, next dha is mahaprana. Can you chant again? महापाशुपतास्त्राग्निनिर्दग्धासुरसैनिका कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभण्डासुरशून्यका ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादिदेव संस्तुत वैभवा कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभण्डासुरशून्यका ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादिदेव संस्तुत वैभवा हरनेत्राग्निसन्दग्ध कामसञ्जीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूपमुखपङ्कजा हरनेत्राग्निसन्दग्धकामसञ्जीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूपमुखपङ्कजा कण्ठादः कटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्नकट्यधो भागधारिणी कण्ठाधः कटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्नकट्यधो भागधारिणी मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेवरा कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेवरा कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी कुलाङ्गना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयान्तस्था समयाचार तत्परा कुलाङ्गना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयान्तस्था समयाचार तत्परा मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी मणिपूरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थिविभेदिनी मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी मणिपूरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थिविभेदिनी आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनी सहस्राराम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी आज्ञाचक्रान्तरालस्था
रुद्रग्रन्थिविभेदिनी सहस्राराम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी तडिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता महाशक्तिः कुण्डलिनी विसतन्तु तनीयसी तडिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता महाशक्तिः कुण्डलिनी विसतन्तु तनीयसी. In this first line, you can also take a pause here if you need. Tadillata samaruchihi षट्चक्रोपरि संस्थिता महाशक्तिः कुण्डलिनी विसतन्तु तनीयसी. Can you chant this way also, Ishu? Okay. तडिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता महाशक्तिः कुण्डलिनी विसतन्तु तनीयसी. भवानी भावनागम्या भवारण्यकुठारिका भद्रप्रिया भद्रमूर्तिर्भक्तसौभाग्यदायिनी भवानी भावनागम्या भवारण्यकुठारिका भद्रप्रिया भद्रमूर्तिर्भक्तसौभाग्यदायिनी भक्तिप्रिया भक्तिगम्या भक्तिवश्या भयापहा शाम्भवी शारदाराध्या शर्वाणी शर्मदायिनी भक्तिप्रिया भक्तिगम्या भक्तिवश्या भयापहा शाम्भवी शारदाराध्या शर्वाणी शर्मदायिनी. Second line, can you chant again, Ishu? It was not clear. The Mahapranas. शाम्भवी शारदाराध्या शर्वाणी शर्मदायिनी. शाङ्करी श्रीकरी साध्वी शरच्चन्द्रनिभानना शातोदरी शान्तिमती निराधारा निरञ्जना शाङ्करी श्रीकरी साध्वी शरच्चन्द्रनिभानना शातोदरी शान्तिमती निराधारा निरञ्जना निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला निर्गुणा निष्कला शान्ता निष्कामा निरुपप्लवा निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला निर्गुणा निष्कुला शान्ता निष्कामा निरुपप्लवा निर्गुणा निष्कला शान्ता. It is nishkala, not nishkula. Can you chant again? निर्गुणा निष्कला शान्ता निष्कामा निरुपप्लवा नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपञ्चा निराश्रया नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निरवद्या निरन्तरा नित्यमुक्ता निर्विकारा
निष्प्रपञ्चा निराश्रया नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निरवध्या निरन्तरा. Uttamam. So I will stop here the revision and I will go to the new shlokas because of the time constraint. We started late today. Let me go to the Dharadhara Suta Dhanya Amogha. धराधरसुता धन्या धराधरसुता धन्या Dharmini धर्मिणी धर्मिणी Dharmavardhini धर्मवर्धिनी धर्मवर्धिनी Dharadhara Suta Dhanya धराधरसुता धन्या धराधरसुता धन्या Dharmini Dharmavardhini धर्मिणी धर्मवर्धिनी धर्मिणी धर्मवर्धिनी Lokatita लोकातीता लोकातीता Gunatita गुणातीता गुणातीता Sarvatita सर्वातीता सर्वातीता Shamatmika शमात्मिका शमात्मिका Lokatita Gunatita Sarvatita Shamatmika लोकातीता गुणातीता सर्वातीता शमात्मिका लोकातीता गुणातीता सर्वातीता शमात्मिका Dharadhara Suta Dhanya Dharmini Dharmavardhini Lokatita Gunatita Sarvatita Shamatmika धराधरसुता धन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी लोकातीता गुणातीता सर्वातीता शमात्मिका धराधरसुता धन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी लोकातीता गुणातीता सर्वातीता शमात्मिका बंधुक बन्धूक बन्धूक कुसुम प्रख्या कुसुमप्रख्या कुसुमप्रख्या
बन्धूककुसुमप्रख्या 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 बाला 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 लीला विनोदिनी लीला विनोदिनी लीला विनोदिनी बन्धूककुसुमप्रख्या बाला लीला विनोदिनी बन्धूककुसुमप्रख्या बन्धूककुसुमप्रख्या बाला लीलविनोदिनी बाला लीला विनोदिनी. There is a dirgha here. Leela Vinodini. Okay. बन्धूककुसुमप्रख्या बाला लीला विनोदिनी बन्धूककुसुमप्रख्या बाला लीला विनोदिनी सुमंगली 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 सुखकरी 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 सुवेषाढ्या 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 सुवासिनी 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 सुमंगली सुखकरी सुवेषाढ्या सुवासिनी सुमंगली सुखकरी सुवेषाढ्या सुवासिनी सुमंगली सुखकरी सुवेषाढ्या सुवासिनी बन्धूककुसुमप्रख्या बाला लीला विनोदिनी सुमंगली सुखकरी सुवेषाढ्या सुवासिनी बन्धूककुसुमप्रख्या बाला लीला विनोदिनी सुमंगली सुखकरी सुवेषाढ्या सुवासिनी बन्धूककुसुमप्रख्या बाला लीला विनोदिनी सुमंगली सुखकरी सुमंगली सुखकरी सुवेषाढ्या सुवासिनी क्षम्यताम् सुवासिन्यर्चनप्रीता 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 So here there are two names, Suvasin Yarchana Prita, Shobhana. So I will combine and teach this. Suvasin Yarchana Prita Shobhana. सुवासिन्यर्चनप्रीता शोभना
सुवासिन्यर्चन प्रीता शोभना शुद्धमानसा शुद्धमानसा शुद्धमानसा. Yeah. So there is Suvasin Yarchana Preeta and then Shobhana and Shuddha Manasa. So we can chant it together or take a pause in between. Suvasin Yarchana Preeta Shobhana Shuddha Manasa. सुवासिन्यर्चन प्रीता शोभना शुद्धमानसा सुवासिन्यर्चन प्रीता शोभना शुद्धमानसा बिंदु तर्पण संतुष्टा बिन्दुतर्पण सन्तुष्टा बिन्दुतर्पण सन्तुष्टा पूर्वजा 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 त्रिपुराम्बिका 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 बिन्दुतर्पण संतुष्टा पूर्वजा त्रिपुराम्बिका बिन्दुतर्पण सन्तुष्टा पूर्वजा त्रिपुराम्बिका बिन्दुतर्पण सन्तुष्टा पूर्वजा त्रिपुराम्बिका सुवासिन्यर्चन प्रीता शोभना शुद्धमानसा बिन्दुतर्पण संतुष्टा पूर्वजा त्रिपुराम्बिका सुवासिन्यर्चन प्रीता शोभना शुद्धमानसा बिन्दुतर्पण सन्तुष्टा पूर्वजा त्रिपुराम्बिका सुवासिन्यर्चन प्रीता शोभना शुद्धमानसा बिन्दुतर्पण सन्तुष्टा पूर्वजा त्रिपुराम्बिका. Uttamam, dhanyavadaः. So I request the participants to raise their hands for practicing these two shlokas chanting. Due to lack of time, I will not be able to call out all the names today, Kshamyatam, because of the delay in starting. So basically, I mean, like last class I told we will have more practice in this class, but however, since we started with the new shlokas, between today's class and next week, I would like to complete the next set of shlokas, keeping one for the last class, and then practice the entire portions. So Kshamyatam, I'll not be able to give an opportunity to everyone to chant today. I will just call out probably 4 to 5 people. Harini. Harini. Yes, ma'am. Can you chant this? Dhara. Dhara dhara suta dhanya dharmini dharmavardhini lokatita gunatita sarvatita samatmika. Uttamam. Dhanyavadaha. Venkateshwaran Gopala. Namaskaram, madam. Namaskaram. Can you chant this? Dhara. Dhara dhara suta dhanya dharmini dharmavardhini
लोकातीता गुणातीता सर्वातीता क्षमात्मिका। उत्तमं, धन्यवादाः महोदय। चित्रा भगिनी। चित्रा भगिनी, you are on self mute. Can you hear me? Yes, I can. Bandhuka kusuma prakhya. Bandhuka kusuma prakhya bala leela vinodini sumangali sukhakari veshaఢ్యా సువాసిని. धन्यवादाः भगिनी। Lavanya. Lavanya, you are on self mute. राम 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 भगिनी Ram Ram Ram. सुमंगली सुखकरी No, no, Bandhuka kusuma prakhya. अस्तु बंधूक कुसुम प्रख्या बाला लीला विनोदिनी सुमंगली सुखकरी सुवेशाढ्या सुवासिनी. क्षम्यताम्। सुवासिन्यर्चन प्रीता। मालिनी भगिनी। मालिनी। नमस्ते मैम। नमस्ते। Can you chant? सुवासिन्यर्चन प्रीता शोभना शुद्धमानसा बिन्दुतर्पण संतुष्टा पूर्वजा त्रिपुराम्बिका. Here there is no Mahaprana in Santushta. It's not there. It's just Santushta. Ta. This is the ta is Alpa Prana. Can you chant again? Okay. बिन्दुतर्पण संतुष्टा पूर्वजा त्रिपुराम्बिका. Gurumurthy Mahodaya. Suvasinirchana. सुवासिन्यर्चन प्रीता शोभना शुद्धमानसा बिन्दुतर्पण संतुष्टा पूर्वजा त्रिपुराम्बिका. धन्यवादाः महोदय। Jaya Ravi. Can you chant Dhara Dharasutta? Jaya Ravi, you are on self mute. Dhara Dharasutta. I'm not able to hear you. Dhara Dharasutta, can you chant? Na shruyate, I cannot hear you. So I'll move on to the next person. Shamyata. Radha Bhagini. Radha Bhagini. Yes, namaste madam. Namaste. Can you hear me? Yes. Dhara dhara suta dhanya dharmini dharmavardhini lokatita gutita sarvatita shamatika. उत्तमं, धन्यवादाः भगिनी। आरती बंधुका। नमस्कार। बंधुका कुसुम प्रज्ञा बाला लीला विनोदिनी सुमंगली सुखकरी सुवेशाढ्या सुवासिनी. भगिनी, here बंधुका कुसुम प्रख्या. बंधुका इति नास्ति. बंधुका दीर्घा is not there. So बंधुका कुसुम प्रख्या. So there is no dirgha here. बंधुका कुसुम प्रख्या. बंधुका कुसुम प्रख्या. Correct. And in the second line, Sukhakari, it is not Shukhakari, it is Sukhakari. And here, Suveshad, it is Dha Mahaprana. Suveshadhya
सुखकरी सुवेशाढ्या सुमङ्गली सुखकरी सुवेशाढ्या सुवासिनी। उत्तमं, धन्यवादाः। अनसूया। राम राम राम। राम राम राम। सुवासिन्यर्चन प्रीता शोभना शुद्धमानसा बिन्दुतर्पण सन्तुष्टा पूर्वजा त्रिपुराम्बिका। धन्यवादाः। So we will stop here. Just reminding again about the communication that you are going to get on your email ID after the class, that today or tomorrow. So you will get a small a link to a form. It's a small form. It's a Google form. So you will have to fill up the form with basic details about yourself and opt for whether you want to give an assessment on by kanthasthīkarana, that is by memorization, which you might have already done, that is chanting without seeing the book or the script. And second option is chanting by seeing the script. So you can opt for one of this in the link that would be given. So based on the responses, we will have a date decided for the assessment, and we will communicate to you on the date and time after a week or so. So as I said, I would, while it is not mandatory for you to take part in the assessment, it's not that must and should you should take part in the assessment. It is, I feel it is an opportunity for all of us to present whatever we have learned till now and continue our learning further. So it is from that perspective, it is good to take the assessment. So with that, I will close today's class with Mangalam. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते। धन्यवादाः। Ram Ram Ram. Look forward to see you all in the next class. And again, apologies for the delay in starting the class today. Ram Ram Ram. Ram Ram Ram.